अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग अस। सबसे पहले मैं इमाम से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपनी ओपनिंग स्टेटमेंट दे। आप सब जानते हैं कि बड़ा शानदार कमबैक किया है टेस्ट साइड में। इमामुल हक ने 2 सेंचुरी स्कोर की हैं और इसके ऊपर मैं इमाम से ओपनिंग सवाल करूंगा। इमाम, बड़ा आउटस्टैंडिंग आपका कमबैक रहा पाकिस्तान टीम में और बड़ी जबरदस्त आपने परफॉर्मेंस दी, हंड्रेड्स एंड बैक टू बैक इनिंग्स। क्या फीलिंग्स हैं, कितना कॉन्फिडेंस दिया इस परफॉर्मेंस ने आपको इतनी टॉप रैंक साइड के अगेंस्ट, और क्या कहना चाहेंगे लुकिंग फॉरवर्ड टू द कराची टेस्ट? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। देखिए, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि जब आप ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट होम कंडीशंस में खेलते हो और उसके बाद ऐसी परफॉर्मेंस अल्लाह ताला आपसे कराता है, तो मेरे ख्याल से ये जो एक्सप्लेन नहीं कर सकते इंसान वर्ड्स में, बट ये होगा कि जो मेरी फर्स्ट क्लास की जो परफॉर्मेंसेस थी, जो डोमेस्टिक में मैंने 4 डे क्रिकेट खेली थी, उससे मुझे काफ़ी हेल्प हुआ। ऑल्दो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 5 साल हो गए हैं पाकिस्तान से खेलते हुए। फ्रॉम लास्ट 1.5 ईयर आई वाज इन द टीम, बट मैं प्लेइंग 11 में नहीं था, मैं 12th मैन था। उससे भी काफ़ी हेल्प हुई मुझे। मैंने बाहर बैठ के काफ़ी कुछ सीखा और काफ़ी कुछ मैंने अपनी गलतियों को एनालाइज़ किया और मैंने हार्ड वर्क किया कोचेस के साथ। और मेरे एक प्रोसेस था, उस पे मेरी कोशिश थी कि जैसे मेरी परफॉर्मेंसेस ओडीआई में मेरी शुरू से कोशिश थी कि मैं वैसी ही परफॉर्मेंसेस टेस्ट में लेके आऊँ। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का बहुत करम है और उसके बाद पेरेंट्स की दुआएं, जिस वजह से ये जो है अच्छा कमबैक हुआ। और बिल्कुल कराची का टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और मेरे ख्याल से ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी साइड है कि वो बहुत अच्छा कमबैक करती है और बहुत हार्ड आते हैं, तो हमें भी बहुत ऑन द टोज होना पड़ेगा और बहुत अच्छी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। थैंक यू इमाम। आप सवालात हम स्टार्ट करते हैं। शब्बर, अली हसन और फिर महमूद रियाज। अस्सलाम वालेकुम इमाम, कैन यू हियर मी? शब्बर, आपकी आवाज नहीं आ रही है हमें। एक सेकंड। शब्बर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। एक सेकंड यार, अब आ रही है आपको मेरी आवाज? चलें जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। शब्बर, अभी हमें आवाज नहीं आ रही है। अली हसन। अच्छा, देखिए, इमाद जबरदस्त परफॉर्मेंस रही आपके रावलपिंडी टेस्ट में दोनों इनिंग्स में, लेकिन ऑस्ट्रेलियन जो बैट्समैन है और बॉलर्स हैं वो ये कहते हैं कि कंडीशन जो थी विकेट की ऐसी थी कि किसी भी पेसर को खेलने तो बैटर को जो है कोई सॉरी, अपना सवाल रिपीट करें प्लीज। अच्छा, दोबारा रिपीट मैं करूंगा कि ऑस्ट्रेलियन जो है वो कहते हैं कि रावलपिंडी की जो विकेट थी वो बैट्समैन के लिए इतनी खास साबित नहीं हुई, इवन उनके बॉलर्स के लिए भी। अब वो भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कराची में अगर बेहतर विकेट बन जाए तो अच्छी क्रिकेट देखने को मिल सकती है, क्योंकि ये वो नहीं चाहते कि मैच का रिजल्ट जो है वो ड्रॉ में आए। आप क्या कहना चाहेंगे? देखें, बिल्कुल ऐसी बात है कि कोई भी नहीं चाहता कि रिजल्ट जो है ड्रॉ की तरफ आए। ऑब्वियसली 5 दिन की जब क्रिकेट होती है तो सबकी कोशिश होती है, हमारे थिंक टैंक की भी थी कि जी 5 दिन का जो मैच होता है उसमें रिजल्ट आए। मगर ऑस्ट्रेलिया की कंडीशंस पे जब हम जाते हैं तो वो हमसे पूछ के विकेट्स नहीं तैयार करते और वो उधर उस हिसाब से ट्रैक तैयार करते हैं। और मेरे ख्याल से हमें जो है हमें अपनी स्ट्रेंथ को देखना चाहिए और हमें अपनी स्ट्रेंथ पे ही रहना चाहिए। और बिल्कुल हमारा भी यही कोशिश है कि कराची वाले जो मैच में है वो बिल्कुल रिजल्ट है, जाके जो मैच है। और मेरे ख्याल से मैच बहुत अच्छा हुआ है, हमने उनके पूरी टीम को आउट भी किया है। और उसके बाद मेरे ख्याल से 70 ओवर्स की जो क्रिकेट थी वो नहीं हो सकी। एक दिन बैड लाइट हो गई और एक दिन जो है बारिश हो गई। अगर वो चीज ना होती तो शायद हो सकता था हमने दोबारा उनको बैटिंग करवानी थी। तो अनफॉर्चुनेटली ये सब नहीं हुआ, लेकिन अब कराची जो है लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट टेस्ट और इंशाल्लाह पूरी कोशिश होगी कि जो है उस चीज का रिजल्ट है और हमारी फेवर में है। मीर अली, शब्बर, अब आ रही है आपको मेरी आवाज? जी जी, आवाज आ रही है। हाँ, ग्रेट। अच्छा इमाम, अस्सलाम वालेकुम। कल हमीद राजा साहब ने ये कहा था कि जो हम लोगों का ओपनिंग पेयर है वो अनसेटल्ड था और बॉलर्स के बारे में उन्होंने बात की कि थोड़ा मतलब फर्स्ट चॉइस वो नहीं था। तो और इसी वजह से जो है वो इस तरह की पिच बनाई गई जो थोड़ा पाकिस्तान के लिए चीज़ों को आसान कर दे। तो डोंट यू थिंक कि आपको भी क्या ऐसा लगता है कि आप एक अनसेटल्ड पोजीशन में टीम में थे, या आपकी जो इनिंग्स जो आपने खेली मतलब वो उस लेवल की क्वालिटी की नहीं थी जिस लेवल की मतलब एक बैट्समैन सोचना चाहेगा कि यार मैंने परफॉर्म किया है? देखें सर, बात यह है कि मेरी टीम में पोजीशन सेटल्ड हो ना अनसेटल्ड हो, क्रिटिसिज्म तो मेरे पे होना ही है, चाहे मैं परफॉर्म करूं या ना करूं। मैंने अभी आपको मेंशन किया कि मुझे 5 साल टीम में हो गए हैं खेलते हुए। मेरे पाकिस्तान से ऑलमोस्ट कोई 60 मैचेस हो चुके हैं। तो उसके बाद भी क्रिटिसिज्म आता है और इसका मुझे कोई दुख नहीं है। दिस इज वेरी नॉर्मल टू मी। और बिल्कुल ऐसी बात है कि अगर आप देखें जो हमारा ओपनिंग जो पेयर था वो आबिद अली और जो है पहले इमरान भट्ट आया, फिर अब्दुल्ला आया। मैं टीम के साथ था मगर मैं प्लेइंग 11 में नहीं था। बाकी मेरा काम है परफॉर्मेंस देना।
क्वालिटी की इनिंग्स थी या नहीं थी, वो मेरा थिंक टैंक जो है मुझे वहां से पता चल जाता है कि कितनी क्वालिटी की इनिंग्स थी या नहीं। जो मेरे कोचेस हैं, मेरा कैप्टन है, जो हमारा थिंक टैंक है, मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट वो लोग हैं कि वो क्या मुझे गाइड करते हैं और क्या मेरे से एक्सपेक्ट करते हैं और क्या वो रेट करते हैं मेरी इनिंग्स को। मेरे ख्याल से जो उनकी बात है वो मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि बाहर की बातों की। जो बाहर के जो लोग और जो परसेप्शन है लोगों की, वो मेरे बारे में क्या है कि क्वालिटी की इनिंग्स थी या नहीं, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। लोगों की अलग अलग राय है और मैं सबकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, बट ये है कि मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि जो मेरा थिंक टैंक है, जो मेरा कैप्टन है, जो मेरे कोच है, वो मेरी इनिंग्स के बारे में क्या सोचते हैं। महमूद रियाज। अच्छा इमाम, यहाँ पर जो कैंप लगा, जो जिसके अंदर के सिनेरियो बेस्ड बैटिंग हुई, आप मोहम्मद यूसुफ का साथ होने से आपकी बैटिंग में कितनी परफॉर्मेंस में आप समझते हैं टेक्निक में बेहतरी आई? अस्सलाम वालेकुम। देखें, बिल्कुल जो हमारा यहाँ पे जो कैंप लगा था, मैंने बात और भी इंटरव्यूज में बोला है कि वो बहुत ही अच्छा कैंप था, क्योंकि एक तो उसमें काफी कुछ प्लेयर्स जो पीएसएल में थे और जो प्रॉपर के ऊपर के बैट्समैन थे, उनको काफी लंबी बैटिंग मिल रही थी और हमारे लिए वो विकेट्स टफ थे, उधर बॉल ट्रेवल नहीं कर रहा था और हमने काफी जो है उसमें मैच टफ से टफ हुई। बाकी जहां तक बात रही यूसुफ भाई के साथ अभी ऑब्वियसली उनकी वो फर्स्ट टीम है। मेरे ख्याल से जो है उनकी जो सबसे अच्छी चीज है, वो इतना ज्यादा आपको कॉम्प्लिकेट नहीं करते चीजों में, वो सिर्फ वो आप हमसे पूछते हैं कि आपको किस चीज की जरूरत है और वो कोशिश करते हैं कि चीजों को कॉम्प्लिकेट ना करें। मेरे ख्याल से यही सबसे अच्छी चीज है, क्योंकि कराची के जब हमारा कैंप लगा उसके बाद टेस्ट मैच में सिर्फ 5 से 10 दिन रह गए थे। 10 दिन में अगर आप बहुत ज्यादा टेक्निक पे काम करोगे तो मेरे ख्याल से इतना अच्छा नहीं होता, और वो उन्होंने किया। उन्होंने बिल्कुल टेक्निक की कोई बात नहीं, टेक्निकल बात जरूर की और उन्होंने सिर्फ पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में बात की। जी, अगले 3 क्वेश्चंस एहसान खान, अतीकुर रहमान और बदियुज्जमान। इमाम, मेरा महमूद से मिलता जुलता सवाल था, यूसुफ से मुताल्लिक था कि मोहम्मद यूसुफ तो हैं, लेजेंड हैं, हमारी टीम के साथ जो है वो आ रहे हैं, लेकिन आप समझते हैं कि परमानेंट बैटिंग कोच की जरूरत है? गुज़िश्ता कुछ अरसे से पाकिस्तान टीम के साथ कोई परमानेंट बैटिंग कोच नहीं आ रहा। समझते हैं कि कोई ऐसा कोच हो जिससे मुस्तकबिल में एक लंबे टाइम के लिए पाकिस्तान टीम को, जो हमारे बैट्समैन है, बैटर्स हैं हमारे, उनको फायदा उससे? देखिए महमूद भाई, मेरा तो काम है क्रिकेट खेलना, ये तो सिर्फ बोर्ड की चीजें और मेरे हाई मैनेजमेंट की चीजें हैं। हमारा तो जब हम टीम में होते हैं तो हमारी तो कोशिश होती है कि जो भी बैटिंग कोच हो उनसे हम डिस्कस करें और उनके जो एक्सपीरियंस है और उनके जो प्लेइंग डेज में उन्होंने जो सक्सेस हासिल की है उनसे फायदा लें। बाकी ये सारी जो चीजें, ये तो मेरे ख्याल से बोर्ड की है और वही बेहतर जानते। जी, अतीकुर रहमान और फिर बदी। इमाम, ये पूछना चाहूंगा कि आपने बहुत अच्छी इनिंग खेली, दोनों इनिंग्स में जो है अच्छी सेंचुरी बनाई आपने, तो क्या इरादा है और जाहिर बात है होगा भी कि व्हाइट बॉल में भी आप इसी तरीके से कम बैक करें और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी आप जो है व्हाइट बॉल का भी कम बैक करें? अतीक भाई, व्हाइट बॉल का कमबैक तो नहीं कहूंगा। व्हाइट बॉल तो मैं खेल रहा हूँ वनडे काफी अरसे से, 4 साल से 5 साल से पाकिस्तान टीम से परमानेंट मेंबर हूँ व्हाइट बॉल का। बट ये जरूर है कि इंग्लैंड की सीरीज जो हमने लास्ट ओडीआई क्रिकेट खेली थी, उसको काफी टाइम हो गया, शायद इसलिए आपको लग रहा है कि अब वो कमबैक है। हमारी जो 2 सीरीज थी वो बेसिकली अनफॉर्चुनेटली न्यूजीलैंड और वेस्ट इंडीज वाली कैंसिल हो गई थी, तो उसमें स्पैन काफी आ गया। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह वनडे की परफॉर्मेंसेस मेरी बहुत अच्छी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कोशिश ये होती है कि मैं जो अपना प्रोसेस है और जो मैंने हार्डवर्क और जो मैंने चीजें की भी है, मैं सिर्फ उस पर यकीन रखूं। रिजल्ट मेरे हाथ में नहीं है। मेरी हमेशा से यही कोशिश रही है कि डे बाय डे अगर मेरी 1% भी इंक्रीज हो रही है, अगर इंप्रूवमेंट आ रही है, तो मेरे ख्याल से बेटर है। बदियुज्जमान, अपना सवाल करें प्लीज। अच्छा इमाम, आप पे लेबल तो लगा हुआ है पर्ची का, चाहे वो आपने भी खुद ही कहा कि चाहे मैं परफॉर्मेंस दूं या ना परफॉर्मेंस दूं, तो मुझे लोग जो है वो तनकीद करते हैं। कभी ऐसा होता है कि इतनी अच्छी परफॉर्मेंस भी दें, सेंचुरी भी स्कोर करें, फिर लोग जो है आकर कहें कि आपकी इनिंग की वजह से पाकिस्तान मैच जीत की तरफ नहीं गया, ड्रॉ हो गया? दुख होता है कि अच्छी परफॉर्मेंस दो तो भी तनकीद, ना दो तो भी तनकीद। बदी, उन्होंने जवाब दे दिया है। काइंडली अगर आप कोई और जवाब सवाल कर लें प्लीज, उस पर वो बात कर चुके हैं प्लीज। अच्छा, ये इमाम ये बता दें कि चले दोनों मैचेस में सेंचुरी आपने की, वहां की बैटिंग विकेट थी, उसमें ऑस्ट्रेलियन भी कह चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया जो खासतौर पर नेशनल स्टेडियम की पिच है, ये थोड़ी सी ग्रीन होगी, तेज बॉलर को मदद भी कर सकती है, और यहाँ हमेशा से नतीजा रहा है ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के जो मैचेस हुए। तो क्या समझते हैं कि जैसी भी पिच होगी इमाम उस पर भी जो है कोशिश करेगा कि यहाँ भी सेंचुरी स्कोर करे? थैंक यू बदी।
बदी भाई, मैंने अपनी मर्जी से क्यूरेटर को नहीं बोला था कि पिच मेरी मर्जी से बनाओ। मेरे कोई रिश्तेदार नहीं है पिच वाला। मेरा तो जहां मैंने उनको नहीं बोला पिंडी वालों को कि मेरे मतलब की विकेट बनानी है। ठीक है, सबके लिए वही विकेट थी, ऑस्ट्रेलिया के लिए भी वही विकेट थी। ऑस्ट्रेलिया को हमने आउट किया पूरी टीम को, उनका कोई 100 नहीं हुआ। तो मैंने अपनी मर्जी से उसको नहीं बोला था पिंडी वाले को कि भाई मेरी मर्जी है, ताकि मैंने ईच इनिंग में 100 करना है। कराची की विकेट ऐसी वही होगी जो फर्स्ट क्लास में जिस तरह हम खेलते हैं। पहली दफा नहीं खेलूंगा मैं कराची की विकेट पे। और मैं जरूर ये बताऊंगा कि मैंने जितने टेस्ट मैचेस खेले और जितने परफॉर्मेंस किए, वो मेरी जितनी भी परफॉर्मेंस थी इससे पहले थोड़ी बहुत टेस्ट मैच में, वो सारी बाहर की थी। मैंने साउथ अफ्रीका, आयरलैंड और इंग्लैंड में टेस्ट मैच खेले। तो चाहे ग्रीन विकेट बने, येलो विकेट बने या ब्राउन विकेट बने, मेरा काम है क्रिकेट खेलना और मैं खेलूंगा। परफॉर्मेंस अल्लाह के हाथ में, मेरा काम है सिर्फ अपनी प्रैक्टिस पे बिलीव करना। बदी अपना माइक म्यूट कर लें। लास्ट 2 क्वेश्चंस, हुजैफा एंड इमरान। इमाम, सबसे पहले बहुत बहुत मुबारक हो 2 इनिंग्स में बैक टू बैक 100 करना। मेरे क्वेश्चन आपकी परफॉर्मेंस से रिलेटेड नहीं है, एक जनरल बात यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है जब भी बैटिंग करती है वो 2.5 और 3 के एवरेज से खेलती है। अब ये मैं समझ आता है कि कंडीशन इस तरह की होती हैं। होम पे भी हम 4 की 100 पे नहीं जा पा रहे, उसी पिच पर ऑस्ट्रेलिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं हमें अपने माइंडसेट में और टैक्टिक में थोड़ी सी चेंजेस की जरूरत है कि हम तेज खेलें, क्योंकि मॉडर्न डे क्रिकेट टेस्ट मैच भी अब जो है वो रन पर ओवर ज्यादा मांगते हैं। थैंक यू। जी बिल्कुल, मेरे ख्याल से अगर किसी भी चीज में अगर इम्प्रूवमेंट की जरूरत है तो बिल्कुल होनी चाहिए। और अगर आप ये देखें कि ऑस्ट्रेलिया की एक नंबर 1 साइड है, टॉप 3 के जो उनके रैंक के बॉलर्स भी हैं इस टीम में। और समटाइम्स जो होता है कि वो थोड़ा सा जो है फील्ड के हिसाब से रन रेट थोड़ा सा स्लो होता है। ऐसा नहीं होता कि उनकी बॉलिंग है, थोड़ी सी फील्ड समटाइम्स ऐसी हो जाती है कि आपको उसके हिसाब से थोड़ी देर खेलना पड़ता है। और हमारी बिल्कुल कोशिश होती है कि हम अपना जो रन रेट है वो ऊपर करें, और पूरी कोशिश है, इस पे काम भी हो रहा है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट मैचेस में आप देखेंगे कि बेहतरी आएगी। जी लास्ट क्वेश्चन, इमरान। अच्छा इमाम, सुना है कि पहले टेस्ट से पहले काफी डिबेट भी हुई मैनेजमेंट की, और शान को और आपके दरमियान एक टाई था कि दोनों में से कौन खेलेगा। शान ज्यादा फॉर्म में थे तो उनकी तरफ शायद ज्यादा वोट होंगे, लेकिन आपने परफॉर्म करके जो है वो साबित किया जबरदस्त। तो आपने सेंचुरी दोनों बना के हार्ट का इशारा भी किया था, तो शायद गालिबन बाबर आजम की तरफ था वो इशारा, क्योंकि वो आपको जो है वो खिलाना चाह रहे थे टेस्ट मैच में। हार्ट का नहीं था, कोई और इशारा था, मैं कंफर्म कर दूं। बट आई थिंक इमाम सर आपकी बाबर जी जो बता दें। आपकी बाबर से बात हुई है कि वो मुझे खिलाना चाह रहे थे? अरे मैं तो आपसे सवाल कर रहा हूँ, अगर नहीं है तो आप बोल। चलो लाइटर नोट पे वो कह रहे हैं, लेट्स मूव ऑन। सर दूसरी पहली बात ये कि सर बिल्कुल शान बहुत परफॉर्मेंस कर रहा था माशाल्लाह। शानी ने पीएसएल में बहुत परफॉर्मेंस की है, मगर इससे पहले मैं टेस्ट जो है बांग्लादेश के साथ भी मैं था, और मैंने जो फर्स्ट क्लास जो अभी खेली है डोमेस्टिक, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह 100 की एवरेज से रन्स किए हैं। 5 मैचेस में मैंने 531 रन्स किए हैं। अगर आप उसको भी जरा थोड़ा सा देख लें, मैंने भी फर्स्ट क्लास वही खेली है जो बाकी सबने खेली है। और दूसरी बात यह है कि वो हार्ट का जो है इशारा नहीं था, दैट समथिंग वेरी पर्सनल, और वो मेरे और बाबर और हमारी एक टीम की चीज है जो मैं प्लीज डिस्क्लोज नहीं करना चाहूंगा। थैंक यू वेरी मच इमाम, थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग अस। एक सेकंड बैठे रहना। थैंक यू जी, शुक्रिया। इमाद मोहम्मद यूसुफ का बताइएगा। मैं आपको बता दूंगा। First question then please to Mel Farrell. Thanks, Brian. Hi, Davey. Just want to ask you about the relationship that you seem to have instantly struck up with the Pakistan fans. You seem to have such a knack for being able to connect with crowds around the world, but how has this been different? Yeah, thanks, Mel. I think, you know, from my point of view is we're entertainers as well. So I think, you know, if I'm not playing out in the middle where I'm batting and I'm fielding, you know, I like to obviously get everyone involved and, you know, get the crowd up and going. And that's what I've always tried to do, engage with the fans. And they're the most important people in our game. They come and support us. And, you know, we try and put on entertainment if we can. And, yeah, I just love getting involved. And, you know, first time, obviously, for me over here, we haven't been here in over 2 decades. And I think it's important to
engage with the fans, not just from a cricketing point of view, but from a point of view from where we sit. They follow us on Instagram. They come out to the ground. They support us there, and it's important for us to give back. Tom Decent, please. Hi, Dave. Just before we get on to some cricket, just wanted to get your reaction to the news of Shane Warne's passing. I understand you're one of the first few guys to find out. Sort of your best sort of Warney story, I guess. And obviously there's a state funeral looking like March 30, whether you might be trying to get back for that. Oh, sorry, was that about Shane? Just the reception. Yeah, so I was asking you about Shane, just your reaction to that. Okay, yeah. And his state funeral is going to be on March 30. So I presume you'll be back in Oz by then. Maybe you're going to try and go to that, and just your thoughts on his passing. Yeah, look, 100%. I'll be trying to get down there. Obviously, it still hasn't really sunk in. I think just for one, obviously he was in Thailand and he was away from pretty much everyone that he's close to. When we first found out, we thought it was a joke. Like, Shane's passed away. Like it really didn't sink in at all. And as I said, it still hasn't. Obviously, he from my point of view, as a kid, I had his poster up on my wall. I wanted to be like Shane. I started my career early on by leg spin, batting middle order. We idolised him. You just look at the tributes from around the world. He's touched millions and millions of people, and from different countries around the world, celebrities, you name it. He's such a loyal guy. He's always stuck by me. Every time I've engaged with him in any ways, he's always asked us to come for a beer, come to dinner, help us, give advice. He always just wanted to help, and that was Shane. And he's going to be dearly missed. We're going to be missing rocking up to the ground and hearing his stories, and he's just such a likable guy. And Australia is obviously worse off with him leaving us. Is there any particular Warney story everyone's been telling, hundreds over the last few days? Is there any particular one on or off the field that you particularly enjoy with him that you wouldn't mind sharing? I think one of the funniest moments I think everyone's seen is when we were in Africa and he was there and he was caught snoozing in the change room, because that same morning we didn't know where he was. We were about to leave for the bus, and out rocks Warney from the doors of the hotel, still buttering his peanut butter toasted sandwich. So, they're little things away from cricket that are funny to us, because that's obviously things that people don't see besides when he fell asleep on TV at the ground. Peter Lawler, please. Good morning, Dave. Two things. One, what would you say to your cricket playing colleagues around the world about the prospect of touring Pakistan? Two, what was your assessment of the pitch? It's become quite an issue. Yeah, look, I've obviously, we went to Islamabad first, and I've got nothing but great words to say about the place. It's amazing. It's you got the scenery, the mountains in the background from the hotel. You can see it from the ground. You can see it. The people were absolutely amazing. They engaged not just the Pakistan team but us as well. They were cheering for both teams, and I think they were just overall excited that cricket was back played in Pakistan. Obviously, there's a lot of people to thank to get this tour up and about with Cricket Australia, the PCB, the military and the police force to make sure everything's safe and sound, and we applaud them for that, and we're grateful for this opportunity. From our point of view on the pitch, obviously it was a bit benign. Only 14 wickets were taken, but at the end of the day, I think the curators obviously did the best that they could do, and we just have to move on from that wicket and see what was produced here in Karachi. Faizan Lakhani, please. Thanks. Hi. Thanks. My question was actually about the wicket as well. What sort of wicket are you setting, David, in Karachi after the dead wicket in Rawalpindi? And also, if you could share if there is any medical-related updates from your camp. Yeah, look, as I said about the wicket, there's going to be a variety of challenges. It's the unknown. Obviously, us coming here, we don't know what
to expect. We didn't have a warm-up game. We're pretty much thrown into obviously having some practice on wickets that were turning, and then obviously out in the middle it was quite flat and didn't really offer anything, to be honest. I think you look at our first innings, a lot of poor dismissals. I feel like coming here to Karachi, we have our first hit in about an hour and a half, 2 hours. So we'll be able to try and sort of assess then. And that's all I've pretty much got on the wickets. I didn't get your last question. I didn't understand. It was about if there is any medical related updates from your camp. Medical updates? Yes. There have been rumors that there are some positives. If you could confirm or deny, if you have heard anything. Or I literally haven't been outside my bedroom this morning, so I don't have any answer for that. Sorry. No worries. Andrew Ramsey, please. Oh, hi, David. Just on a slightly different tack, the ICC announced the changes to the run-out law at the bowlers' end, sort of to demystify that a bit. I know you've made a couple of pointed statements, maybe not speaking, but just in actions in the past. I just wondered what your thoughts were on that change and what that might mean. I still think the history of the game suggests that it's a spirit of cricket thing. You don't expect players to do that. I do agree with the fact that if you are backing up and you're out of your crease by a long way, especially I think it probably more happened predominantly in the end of a white ball 50-over game, or obviously in 2020 cricket we've seen it. So look, at the end of the day, as a batsman, you've got to stay in your crease. There's no doubt about that. And I think if you're silly enough to, if you are to get caught out like that and run out, that's your own fault as a batsman. You're told not to leave before the bowlers let the ball go. So just don't do it. I think what's important for the game of cricket is that bowlers don't be looking for that, because then you're going to slow the game down even more. And then, I know before being a captain, it can be frustrating, and you're taking time out of the game. So I think there's some areas there that needs to be addressed. That's each individual basis as well. Raj, please. Hi, Dave. Just a couple of hours before Shane Warne's body left Thailand, and it should arrive in Australia a bit later, you said you're going to make it to the memorial service at MCG. Can you just talk a bit of that? How would that memorial service be, and how emotional would it be for players who are going to attend? It's definitely going to be extremely emotional for everyone. As I said, it really hasn't sunk in with us. And obviously there'll be a big, huge contingent of Victorians obviously being hosted at the MCG. There'll be lots and lots of people come out to pay their respects. You've seen all the flowers and even cigarettes and beers placed on the Warney statue at the MCG. It just shows you how many people he's touched and how many people are feeling it right now around the world. And yeah, definitely I'll be trying to get down there, for that. I think we do arrive back home, and I think on the 27th or 28th. So I think it's important as a player, and obviously past players will be there as well to recognise that. And obviously we've got Rod Marsh's funeral, which will be taking place as well, I think before that as well. So we're not going to be home for that, but I'm sure we'll be tuning in online if we can. Eddie Summerfield, please. Eddie, are you there? Sorry about that, guys. David, thanks so much for your time. Pat the other day was hinting at perhaps 2 spinners for the second test. Is that something you'd like to see, and is likely that we will see in this Australian 11 for the next game? Yeah, look, the selection's obviously up to the selectors and what they feel is the best team going into the game. As I said previously, it was the unknown of what the wicket was going to do in Islamabad. We haven't obviously yet seen what the wicket is like here in Karachi, so I'm sure they'll assess that, and then they'll make their decisions based on what they see. Adrees Malik, please.
Thank you, Brian. David, definitely you are enjoying the Pakistan tour. And what sort of pitch you are expecting from the Karachi, and is there any hope, any wish for you? Because number of fans you have in Pakistan, and especially after Pindi Test, there is more and more you are getting. Is there anything in any wish in your mind that you will make a century at Karachi? From a batsman's point of view, you can roll the same one as Islamabad, and hopefully I don't get out. But that's not what we want from a cricketing point of view. You want something to obviously to break up, be something there for the spinners, a little bit more sort of it wasn't turning as much. You saw Nathan Lyon, when he was hitting that rough, it wasn't doing anything. It was just pretty much going straight on, slow off the wicket. It wasn't any like that variable bounce, which you generally do see on worn wickets. And as I said just before, we don't know what we're expecting here in Karachi until we rock up and see the wicket. But I just want a game where you can actually create 20 chances. It's something that's going to be exciting and entertaining for the crowd. Thank you very much. Thank you, Brian. Wajahat Kazmi, please. Hi, David. I hope you're having a good tour of Pakistan, and wishing you a very warm welcome to Karachi. Since you guys have now played the first test match where the pitch didn't have much to offer for the bowlers, but with the Karachi test coming ahead that is expected to feature a spin-friendly track, how does Australia see tackling the likes of Nouman Ali and Sajid Khan? Yeah, look, I think it's the way that we addressed him in the first test. As I said, there's a few dismissals that, obviously batsman error. So from our point of view, we'd obviously got to wait to see what the surface is like. And depending on if it's turning off the straight or if it's just out of the rough, I think then you assess as a batsman when you're out there. So everyone's got their game plan and everyone will stick to their game plan. And as I said, we have to wait to assess the Karachi wicket. And it's very difficult to say anything about it, especially, if you win the toss and bat first and you got pretty much a bare wicket to bat on before it starts taking any turns. So obviously that's toss dependent from a batting stance. Two more questions now, please. Imran Siddiqui and Husaifa Khan. Imran first, please. Hello, David. David, I think you are one of the most loved Australian cricketer in Pakistan, and Pakistani fans often want you to see in PSL. Do you have any future plans to play in Pakistan Super League? Unfortunately, when the Pakistan Super League's on, I'm actually playing international cricket, so it's very difficult for me to come and play in that. Last question now, please. Husaifa Khan. Thanks and welcome to Karachi, David Warner. First of all, my question is related to Shaheen Afridi and Naseem Shah. You have a good time with them in Rawalpindi. How difficult was them to face on already a dead pitch in Rawalpindi, and how challenging it will be to face them in Karachi, because Shaheen Afridi is on top right now. And would you got some dance move for Karachi as well? Thank you. I don't think it's too difficult to face the faster bowlers on a wicket like that. There's no pace, there's no bounce. So, I think if reverse swing comes into play, then it might be a little bit different. It's not offering anything at all besides probably a sore back for the fast bowlers and sore feet. So, from a batting point of view against fast bowlers, it's not really the challenge itself. I think maybe the first 6 balls when the ball's brand new. Dance moves, we'll have to wait and see. I'll see what bag of tricks I've got before I pull out some more. Thank you very much, everyone. Thank you very much, everyone. Take care and look forward to seeing you again soon. Thank you. Thank you. Thanks, David. Thanks, Brian. Thank you. Thank you. Thanks, Dave.